So next type of cause of failure in hydraulic failure is gulling. Gulling, which is formed on the downstream slope of the embankment. Embankment कहले आर डैम को हम embankment dam भी कहचे, तो सेटा embankment भी कहा जाए. Due to heavy rain and consequent surface runoff. Consequent surface runoff, heavy rain may lead to failure of the dam. जोर से वर्षा हेले हेवी रनअफ सरफेस रनअफ पानी जोर से बही जावा हेले एभलिया गली फॉर्मेशन हुए बा गली जाए आम कहते गली फॉर्मेशन हुए. Turfing of the slope and provision of bombs at certain intervals and proper drainage is essential to prevent a bomb formation, and proper drainage is the essential to prevent this type of failure. Next is toe erosion. Toe is the downstream portion of the dam. Toe. So toe erosion may be due to the tailwater or cross currents that may come from spillway. Spillway that आम पर पढ़ा. Next रे डैम सरला पर आम spillway पढ़ा. Spillway buckets. This is the toe erosion. Next is the cracking due to frost action. Frost कहले जेटा तुषारपात बा बरफ कुआपथर तुषारपात जेटा कहूँ सेटा कौटी लो टेम्परेचर एरिया रे जो कि तार स्ट्रक्चरटा डैमेज हो. स्ट्रक्चरटा डैमेज हेले due to frost action dam may be damaged. These are the different causes of hydraulic failure, different reasons of hydraulic failure. Next is the seepage failure. Second reason जोटा कि mostly dam failure cause है seepage. That mostly 35% of the dams may failure due to seepage. Seepage always occur in the dam. सब बेले seepage ही हुए. এটা তার স্টাবিলিটি को जदिও नष्ट करे नहीं सेतेबेले नष्ट करिवे जेतेबेले तार परमिसिबल लिमिट रु सीपेजटा अत्यधिक हो जाए. तो सीपेज फेलियर फर्स्ट रीजन है पाइपिंग थ्रू द बॉडी ऑफ द डैम. पाइपिंग थ्रू द बॉडी ऑफ द डैम. पाइपिंग थ्रू द बॉडी ऑफ द डैम फिगर देखा से पानीटा को बाटे जाऊँगी. पानी गोटे पाइप भाया ड्रेन तैयारी करके बाहर पटक बाहर जाऊँगी. The drain from upstream goes to the downstream through which water flows. गोटे ड्रेन फॉर्मेशन हो जाए पाइप बोली कहुच्छी. पाइप भाया पानी जो पशि जाऊँगी डैम भितर से फेलियरटा आमर हो. दिस इज द पाइपिंग ऑफ द डैम. फेलियर थ्रू पाइपिंग. नेक्स्ट इज डैम स्ट्रक्चर भितर पाइपिंग है. नेक्स्ट पाइपिंग है थ्रू द फाउंडेशन. फाउंडेशन कहले डैम तले बा जो फाउंडेशनटा गोटे परभियस फाउंडेशन थी जो पानीटा पशि जाए जोर जो पानी फ्लो हम से तले से पाइप भाया स्ट्रक्चर करके बाहर को पड़े पानी से दिस इज द पाइपिंग थ्रू द फाउंडेशन जो कि डैम फेलियर हुए. हाईली परमेबल स्ट्राटा परमेबल माने पानी जापर कैविटी थी जो सॉइल गुड़ाक से एभलिया परभियस फाउंडेशन में पाइपिंग थ्रू द फाउंडेशन हुए. नेक्स्ट कॉज ऑफ सीपेज फेलियर इज स्लॉइंग. स्लॉइंग कहले कौन जो डैम डाउनस्ट्रीम पोर्शनटा जो पटू नदीटा बहुत लेयरटा कम थी पानी जो ऊपर लेयर तलटा बहुत आम डाउनस्ट्रीम कहूँ. जो डाउनस्ट्रीम पोर्शनटा स्लॉइंग टेक्स प्लेस जो डाउनस्ट्रीम पोर्शनटा सैचुरेटेड थी. सैचुरेटेड सब पानी रे भिजिकी रोथ हाईली परभियस लेयर थी मटीटा पूरा भिजा रोथ सब सीपेज से स्ट्रक्चरटा नष्ट हो. पिक्चर देखले तुम जापर पिक्चर रे ये पोर्शनटा ये डैम पोर्शनटा जोटि कि फेलियर सरफेस आम कहे से पूरा नष्ट हो जाए खाई जाए कहते ड्रामटा जेहतु Earthen Dam. दिस इज द अपस्ट्रीम पोर्शन
and this is the downstream portion. ए पट्टा डैम टाक खाई जाइए जहाँ को आम कहे स्लोइंग बा डाउनस्ट्रीम पोर्शन टा नष्ट हो गला स्लोइंग एटा गोटे टाइप ऑफ क्लोजली रिलेटेड टू पाइपिंग जदि ए पाइप भाया फाउंडेशन होनी डैम डाउनस्ट्रीम को पूरा खाई जाए. दीज आर ऑल अबाउट सीपेज फेल्यूर. आम तापर देखा जे स्ट्रक्चरल फेल्यूर कौन स्ट्रक्चर कौन प्रॉब्लम थिले डैमटा फेल हुए जोटा कि आम कहे स्ट्रक्चरल फेल्यूर. when the stresses of the soil when the stresses of the soil produced by the weight of the embankment by dam and the load of the water exceeds the soil strength besides other causes. ଯେତେବେଳେ ଯେତିକି ଲୋड ନେଇପାରିବା କଥା ସଏଲ୍ଟା ତାଠୁ ଅଧିକା ଲୋड ୱାଟରଟା ଦେବ ସେତେବେଳେ ବା ତାର କନଷ୍ଟ୍ରକ୍ସନରେ କିଛି ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ଥିବ ସେତେବେଳେ ସ୍ଟ୍ରକ୍ଚରାଲ ଫେଲିୟର ହେବ. The first cause of structural failure is foundation sliding. Foundational sliding କେମିତି ହୁଏ? When the foundation of the dam is of fine silt or soft. ଯେତେବେଳେ soft soil ବା siltରେ foundationଟା ତିଆରି ହୁଏ ସେତେବେଳେ ହୁଏ. When the soft weak clay or fissured rocks exist under the foundation. Soft clay ବା fissured rock କହିଲେ जोड़ाक ଯେତେବେଳେ ପାଣି ଯାଇପାରୁଥିବ ବା pervious rocks जोटाक ଆମେ କହୁଛେ. Then excessive water portion in the conform sand silt in the foundation. Water pressure ଯେତେବେଳେ excessive ରହିବ the shear strength of the soil reduce ହେଇଯିବ may reduce the shear strength ତାକୁ ସେ ତା strength ନେଇପାରିବନି ସେତେବେଳେ ଆମର फाउंडेशन स्लाइड्स हुए या डैम फेल करिजाए. ଯେତେବେଳେ लूज सैंडर फाउंडेशन थिबो जोठी बाली अधिकार तैयारी होइथिबो सेठी मध्य स्ट्रक्चरल फेलियर देखा जिवो. एठी फिगर जेंति देखा हैछि एठी जो वीक सॉफ्ट सॉइल तळे फाउंडेशन में अछि जद्वारा कि सॉइलटा शेयर स्ट्रेंथ को वाटर प्रेशर को नहीं पारने तेणु ये स्ट्रक्चरटा फेल होगा नष्ट हो स्ट्रक्चरटा जहाँको आम कहे स्ट्रक्चरल फेल्यूर. नेक्स्ट इज फेल्यूर बाय स्प्रेडिंग. स्प्रेडिंग कौन फेल्यूर बाय स्प्रेडिंग कहले इट मे बी कॉज्ड व्हेन fill is located above the stratified deposit containing layers of soft clay. तेल ये फिगर देख जमी तल गुड़ाक सिल्ट लेयर रखाई सिल्ट लेयर सॉफ्ट क्ले ये सब तले अच्छी से स्ट्रैटिफाइड डिपोजिट बा सॉल्ट क्ले थी से लेयर गुड़ाक से डैम रे फेल्यूर कज हम जहाँ आम कही स्प्रेडिंग. Next is the slope protection failure. Slope protection failure कहले next one cause of structural failure is slope protection failure. जब slope just reservoir level ऊपर को थिबो and above the reservoir level the water energy is dissipated against the turbulent action and within the rocks of the waves may pass through the voids tending to wash out the filter layer. Slope recap of the slope slope line जो ग्लावर बा फिल्टर लेयर थी जो कि पानी परवेश में तो पानी पशि जा पारे वाटर वेव्स द्वारा सरफेसटा नष्ट हो तेणु से डैम टाक से नष्ट कर. नेक्स्ट इज स्लाइडिंग द मोस्ट इम्पोर्टेंट कॉज ऑफ फेल्यूर स्ट्रक्चरल फेल्यूर है स्लाइडिंग. It may occur slowly or suddenly with or without forewarning. Such a failure causes portion of the earthfill dam to slide downstream outwards with
respect to the remaining part. This is the most important cause. बेले बेले ये कौन बेले बेले डैम रे कौन हुए स्लाइड करिया माने फसी जाए डैम रो ऊपर पोर्शन टाक स्लाइड कर जाए गोटे पोर्शन बिना वार्निंग रे जाए स्लाइडिंग टा फेलियर कजे से पोर्शन ऑफ द अर्थ फिल पूरा अर्थ फिल बा माटीटा धसी जाए टू स्लाइड डाउनस्ट्रीम एंड आउटवर्ड्स डाउनस्ट्रीम पोर्शन टा स्लाइड हो जाए विथ रिस्पेक्ट टू रिमेनिंग पार्ट में भी तार रिमेनिंग पार्ट गुड़ा अपस्ट्रीम पोर्शन बा किसी पोर्शन टा थिबो कि डाउनस्ट्रीम पार्ट स्लाइड कर जाइथिबो सेतले दैट इज द मोस्ट कॉमन रीजन एंड मोस्ट इंपोर्टेंट कॉज फॉर द डैम टू फेलियर. Next cause is structural failure. Next class, sorry, structural failure. Next cause is lambda. Upstream slope slides during the sudden drawdown. Sudden drawdown कहले फिगर देखो फिगर तुम जानी पड़थो एपटे मैक्सिमम रिजर्वर लेवल अच्छी हठात कि जिते पानी लेवलटा कमी जाऊँगी वाटर लेवलटा सेते बेले डैम रे एपट पोर्शनटा जेहेतु कमी जाऊँगी धसी जाऊँगी वाटर लेवल कमी जाऊँगी से वाटर प्रेशर हठात कि जिते कमी जाऊँगी कंस्ट्रक्शनटा सफिशिएंट अकॉर्डिंग टू प्रॉपर डिजाइन है नथिबो पुअर कंस्ट्रक्शन है कंपैक्शन ठीक है नथिबो ड्रेनेज प्रॉपर्ली नथिबो ताले सडन ड्रॉडाउन ऑफ वाटर रे स्लाइड कर दियो ड्राम रे पोर्शनटा स्लाइड कर दियो कि तळे एबे माटी रहियो बा ड्राम रे एपट स्ट्रक्चरटा एबे चेंज हो जियो जाको हम कहते फेलियर ऑफ सडन ड्रॉडाउन पानी रो लेवलटा सडन ड्रॉडाउन कले मैक्सिमम रिजर्वर लेवल रु हठात कि वाटर लेवलटा कमी जिवो एटा सब कजेस है स्ट्रक्चरल फेलियर कज गुड़ाक लास्ट एंड फाइनल कज ऑफ फेलियर इज द अर्थक्वेक कजटा आम कौन दिस इज द अर्थक्वेक रू जो मैक्सिमम हाजार्ड्स केमती हुए मैक्सिमम डिस्ट्रक्शन हुए डैम रे हाउ लार्ज द अर्थक्वेक ताले मेन हाजार्ड्स टू द डैम हाउ लार्ज इज द अर्थक्वेक डिपेंड्स अपॉन द अर्थक्वेक रो आमर रिचर स्केल तार अमाउंट केते हाउ नियर द डैम साइट केते पाखर हो अर्थक्वेक हाउ इट इज हाउ नियर द डैम साइट the potential hazards are surface faulting of the dam under the dam ground shaking water waves किछि हे पारे it may also cause cracking of the dam top and central core डिपेंड करी केते अमाउंट अर्थक्वेक हेछि और केते तार तीव्रता भाबे हम जा कहूचे सेटा केते अधिक से अनुसार अर्थक्वेकटा डैमटा जो डैमेजटा डिस्ट्रक्शनटा से अनुसार हम सबू जाक है फेलियर ऑफ द डैम चारि प्रकार आम देखिए फेलियर ऑफ द डैम तापर देखिए आम सेफ्टी मेजर्स कौन नहीं पार फेलियर रु व्हाट आर द सेफ्टी मेजर्स फॉर दिस फेलियर. तो सेफ्टी मेजर्स फास्ट के हमर है हाइड्रोलिक फेलियर आम केमती कर कौन कले दिस कैन बी प्रिवेंटेड बाय adequate spillway capacity spillway हमें पढ़ा आगक स्पिलवेटा कौन तार कैपेसिटी केमती थाए सफिशिएंट फ्री बोर्ड आम ओवरटपिंग को ओवरकम करने प्रॉपर मेंटेनेंस ऑफ द गेट्स पानी गेट जो दिए जाए से गेट प्रॉपर मेंटेनेंस ऑफ द गेट और रेगुलर ऑपरेशन ने आम हाइड्रोलिक फेलियर को बहुत परिमाण में कंट्रोल व प्रिवेंट कर पारिबा. नेक्स्ट इज द सीपेज फेलियर के प्रिवेंट कर दिस कैन बी प्रिवेंटेड बाय प्रोवाइडिंग फिल्टर at the toe of the dam. The seepage को आम within the limit of the dam बड़ी रखा. नेक्स्ट रे प्रोविजन ऑफ सेटलमेंट किसी रखा डैम रे कंस्ट्रक्शन बेले. नेक्स्ट स्ट्रक्चरल फेलियर रेमेडीज है जे स्ट्रक्चर तैयारी करने आगुरी बिफोर द कंस्ट्रक्शन ऑफ द डैम देयर शुड बी द प्रॉपर इन्वेस्टिगेशन ऑफ फाउंडेशन एंड जियोलॉजिकल एस्पेक्ट कहले
माटीर क्वालिटी वा पत्थर कौन डैम या फाउंडेशनटा केमती अच्छी सेटा को प्रॉपर्ली इन्वेस्टिगेट करके डैमटा कंस्ट्रक्ट कले स्ट्रक्चरल फेल्यूर प्रिवेंशन हो पार। नेक्स्ट इज अर्थक्वेक फेल्यूर। अर्थक्वेक फेल्यूरटा आम प्रिवेंशन ये आम डैम रे अर्थक्वेक फेल्यूर प्रॉपर डिजाइन करवा अर्थक्वेक डिजाइन करवा डैम को अकॉर्डिंग टू द अर्थक्वेक डिजाइनटा आम करवा ताहले जाके अर्थक्वेक फेल्यूर हो पार। सेटा एगुड़ा है अर्थेन डैम टाइप्स तार फेल्यूर आ तार रेमेडीज।